Hello my dear friends, I welcome you to yet another session जिसमें हम लोग बात करेंगे पांचवें थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर के साथ जुड़े हुए एमसीक्यू के सॉल्यूशन की। चलिए शुरू करते हैं अपना काम पहले सवाल से। न्यूमेरिकल है पहला सवाल। लेट अस सी व्हाट इट इज। नंबर 1 mole of an ideal gas requires 207 joule heat। 1 mole of an ideal gas n is equal to 1, कितनी हीट लग रही है उसको? Q is equal to 207 joules, requires 207 joules of heat to raise the temperature by 10 degrees Celsius. Delta theta is equal to 10. Delta theta is equal to 10 when heated at constant pressure. Okay, ये जो चल रहा है वो सब constant pressure पे, ठीक है, रहने दो उसको। If the same gas is heated at constant volume to raise the temperature by the same 10 degrees Celsius, the heat required will be how much? केस 1 Cp बोलूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ Cv बोलूंगा। सेम गैस n is equal to 1, how much heat will be required to raise the temperature by 10 degree Celsius? constant volume पे कितना heat लगेगा? that is what the question is. so how will go ahead with it? R की वैल्यू दी गई है। R is how much? they have given the value of R. R is 8.3. the value of R is 8.3. 8.3। यहां से मैं Cp ढूंढूंगा। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R से Cv ढूंढ लूंगा एंड इट इज Cv इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट। तो चलिए बात करते हैं पहले यहाँ पे। सो Cp इज इक्वल टू amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through, so this is Cp is equal to 207 upon 10, that is 20.7। Cp आया मेरा 20.7। ओके, Cv ढूंढते हैं। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, सो 20.7 minus 8.3 is equal to R, so it is how much? 20.7 minus 8.3 12.4। R नहीं रे भैया, ये कितना? ये Cv है। ओके, सो Cv is equal to 12.4। second case, Cv is equal to Q dash upon n into delta theta। Cv is 12.4 into 1 into 10 is equal to Q dash. Q dash is equal to 124। 124 जूल्स हीट लगेगी सेम प्रोसेस करने के लिए, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। चलिए रुक करते हैं दूसरे सवाल का। 150 joules of heat is added to the gaseous system। ऐड किया है conventionally positive 150 joule positive। internal energy is the change in internal energy, that is 10 calories। okay, delta U is equal to 10 into 4.2, that is 42 calories। that is 42 calories। and how much is the work done? so Q is equal to delta U plus W। W is equal to Q minus delta U। 150 minus 42, 108। 150 minus 42 is 108 joules। ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी, सेकंड ऑप्शन। ओके, सही जा रहे हैं। वापस न्यूमेरिकल, और एक बार न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? change in internal energy, delta U is equal to how much? when a system releases, वो गलत दिया, 125 किलो जूल चाहिए वहां पे। releases Q is equal to minus 125 किलो जूल, while 104 kilojoule of work is done on the system। work is done on the system minus 104 kilojoule of work is done on the system। Q is equal to delta U plus W minus 125 is equal to delta U minus 105।
delta U is equal to minus 21 kilojoule. Minus sign indicating that it has lost temperature and hence internal energy. यहाँ सिर्फ value की बात कर रहे हो, the answer will be A, first option. The answer will be A, first option. Okay. Question number 1, 2, 3. उसके बाद चौथा सवाल. क्वेश्चन देख लो एक बार. लेक्चर 5, 1, 2, 3. फोर्थ क्वेश्चन जो है, कहाँ गया भाई फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6. यस, मिल गया. लेक्चर 5 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन: the equilibrium state of a gas is completely described. Okay, what are the thermodynamic coordinates in totality? Pressure, volume, temperature and number of moles या mass, चारों भी. So it is pressure, volume, temperature and mass of the gas, or we write pressure, volume, temperature and number of moles, कुछ भी चलेगा. क्या ऑप्शन दिया देखते हैं? Pressure, volume, temperature. The answer is D, all of these. The answer is D, all of these. Okay, रुख करते हैं पांचवें सवाल का. क्वेश्चन नंबर 5. क्या है क्वेश्चन? The expansion of a gas in a metallic cylinder placed in a larger reservoir of fixed temperature. Okay, एक कंटेनर है, उसको सराउंड किया गया फिक्स टेम्परेचर के कंटेनर से, तो this is going to be an isothermal process. The expansion of a gas in a metallic cylinder placed in a larger reservoir of fixed temperature is going to be an isothermal process. It's going to be an isothermal process. Question number 5. It's A. Question number 6. The first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics is applicable to, it's applicable to isothermal, yes. Is it applicable to adiabatic? Yes. Is it applicable to isochoric? Yes. And therefore it is applicable to all the above. Question number 6 is applicable to D, all of the above. Question number 7. Question number 7. Mathematical equation of the first law of thermodynamics. हमको मालूम है क्या है, इधर कहीं तो भी लिखा है, देखो. Q is equal to डेल्टा U plus W. है क्या ऑप्शन? ऑप्शन A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, D है क्या? यस, इट इज D, फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन D. Question number 8. First law of thermodynamics is based on what? The law states that energy can neither be created nor destroyed. It can be transferred from one form to another. When one form of energy disappears, equivalent amount of energy reappears. The total amount of energy in an isolated system is constant and it is impossible to make a perpetual machine. It's all law of conservation of energy. Therefore, the answer of the 8th question is D, fourth option. It is nothing but the law of conservation of energy. It is D, fourth option. चलिए रुख करते हैं 9वें सवाल का. A gas is in a closed container is heated with 10 joules of energy. Heated with 10 joules of energy. Q is equal to 10 joules. Okay. Causing the lid of the container to raise 2 meter with a force of 3 Newton. Work is equal to force into displacement. How much is the force? It is 3 into 2, that is 6 joule is the work done. 6 joule is the work done. What is the total change in the internal energy? Delta U is equal to how much? Q is equal to delta U plus W. Delta U is equal to Q minus W
Q is equal to 10 minus 6. The answer is 4 joules. कौन सा ऑप्शन है? The answer is B, second option. B, second option. सवाल नंबर 10. सवाल नंबर 10 क्या है? Which of the following is an example of the first law of thermodynamics? कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एग्जाम्पल है? Specific heat of an object explains how easily it changes temperature. Yes, but not associated with first law of thermodynamics. While melting an ice cube remains at the same temperature, it absorbs that heat and uses that heat for what? It uses that heat for converting itself from the solid state to the liquid state without, with some expansion. So the answer is B, question number 10. The answer is B, second option. The answer is B, second option. आशा करते हैं कि ये 5वें लेक्चर से जुड़े हुए तमाम सवाल जो है उसके जवाब एट अ टाइम बोर्ड पे आए हैं. मैं थोड़ा हट जाता हूँ. इफ यू वांट you can write down the solutions, take the screenshot. I am far apart ताकि आपको एक ही व्यू में सब कुछ आ जाए. आशा करते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब आपको समझ में आए हैं. कल मिलेंगे अगले MCQ के सेशन में छठे लेक्चर के साथ जुड़े हुए जो सवाल है उनके जवाबों के साथ. तब तक के लिए रुक जाएंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.